जब आमने सामने होते हैं आर्च राइवल्स तो जाहिर सी बात है थिंग्स विल गेट अ लिटिल हीटेड एंड हीट ऑफ द मोमेंट में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अपहोल्ड करना मुश्किल हो जाता है. Over the years, the Ashes has seen its fair share of controversies. Let's take a look at 5 of them. Number 5. Broad refuses to walk. दो 2013 सीरीज के फर्स्ट टेस्ट में ही there was an incident that showed how serious the two teams were of winning the series. तीसरे दिन पर इंग्लैंड 297 for 7 थे, लीडिंग बाय 232 रन्स, जब स्टुअर्ट ब्रॉड ने एश्टन एगार की डिलीवरी एज कर दी. द बॉल वाज कॉट इन द स्लिप्स, लेकिन अंपायर अलीम डार ने नॉट आउट सिग्नल कर दिया. रिप्लेस शोड इट वाज ऑलमोस्ट ऑफ द फेस ऑफ द बैट, मगर स्टुअर्ट ब्रॉड क्रीज पर ही डटे रहे एंड डिड नॉट वॉक. Well, I think hats off to Stuart Broad for not working. If you nick one to first slip and don't walk, I say well played. Look, the umpire, if umpire gives you not out and you walk, that's dissent. You're going against the umpire's decision. So the umpire is actually there to make the decision. You stand there if you want to stand there. I think it shows a lot of... it's just a natural reaction is when you nick one to slip, you go, and you're off. So for him to stand there, I thought was fantastic. I actually loved it. ब्रॉड 37 पर बैटिंग कर रहे थे और उस इंसिडेंट के बाद 28 रन और बनाकर आउट हुए. Those runs proved decisive as England won the match by a narrow margin of 14 runs. ऑस्ट्रेलियन कोच ने गुस्से में ब्रॉड को ब्लेटेंट चीट कह दिया, but ब्रॉड didn't care क्योंकि इंग्लैंड went on to win the series 3-0. Number 4. Dennis Lilly's aluminium bat. 1979 दिसंबर एशेज सीरीज की बात है. फर्स्ट टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया वर 232 एट द एंड ऑफ डे 1 और डे 2 पर डेनिस लिली और जेफ डायमॉक बैटिंग करने आए, लेकिन लिली के हाथ में कॉम्बैट ब्रांड का बैट था which was made of aluminium. As ball met bat, it made a horrible sound and also damaged the ball. Umpires और इंग्लैंड कैप्टन माइक ब्रेयरली के बीच बातें हुई and the umpires asked Lilly to replace the bat. It wasn't a great thing what happened after that, but by and large it actually wasn't illegal. At the time there was no such rule that said you couldn't use aluminium bats. So my company, my partner and I were manufacturing them and producing them and selling them, and we thought, well, people, they advertise the latest bat that they produce, or the bat manufacturers. We're a bat manufacturer, why shouldn't we expose it? And that's why it was out there in the first place. It made a hell of a clunk, but made a few players laugh, but it was banned in the second test match it was used. He later revealed कि ये सिर्फ एक marketing gimmick था and nothing more. Number 3. Clark's comment on Anderson. It was the Gabba Test in 2013-14 Ashes series जिसमें मिचेल जॉनसन अपने करियर की बेस्ट बॉलिंग कर रहे थे. Australia were on the verge of winning the first test with just 1 wicket to get. मिचेल जॉनसन बॉलिंग कर रहे थे तो जेम्स एंडरसन और शॉर्ट लेग पर खड़े जॉर्ज बेली एंडरसन को स्लेज कर रहे थे. उन दोनों के बीच गर्मागर्मी हुई. अंपायर्स इंटरवीन्ड एंड सो डिड ऑस्ट्रेलियन स्किपर माइकल क्लार्क. क्लार्क कहते हैं he was just standing up for his player when he said to Anderson, "Get ready for a broken arm," with an expletive before the word broken. स्टंप माइक ने इस स्लेज को पकड़ लिया और रेफरी ने क्लार्क को 20% मैच फी का फाइन दे दिया. I've stuck up for my players on a number of occasions, and it hadn't been heard on the stump mic, so nobody's ever spoken about it. So, and again, when I say I regret it, I regret the language I used, and I regret the fact that I said it over the stump mic. So, the last thing I want is boys and girls watching cricket to be going and playing club cricket and saying things like that to opposition players. I think that's unacceptable that the Australian cricket captain is setting that example. इस इंसिडेंट के बाद ICC began regulating the use of stump mics in cricket broadcasts. Number 2. Jon Snow grabbed by Australian fan. 1971 Ashes के फाइनल टेस्ट में इंग्लैंड फर्स्ट इनिंग्स में 184 बनाकर ऑल आउट हुए and Australia had surpassed that score when Terry Jenner was on strike. English fast bowler Jon Snow के हाथ में न्यू बॉल था and he bowled a bouncer which Terry Jenner ducked into. बॉल उनके सिर पर लगी and he was then escorted off the field by a few English players.
ओवर के बाद जॉन स्नो बाउंड्री पर फील्डिंग करने गए, जहां एक स्पेक्टेटर ने उन्हें खींचा और उन्हें मारने की कोशिश की। He escaped, but the crowd started throwing bottles onto the field. इंग्लैंड कैप्टन रे इलिंगवर्थ ने अपने टीम के साथ फील्ड छोड़ने का निर्णय लिया। They only returned after things quietened down, and England went on to win the match by 62 runs. Number 1, the Bodyline Series. इंग्लैंड परेशान हो गए थे विद सर डॉन ब्रैडमैन, जो बन चुके थे बेस्ट इन द वर्ल्ड। Bradman was missing in the first test and England won it by 10 wickets, but he returned for the second and levelled the series. Adelaide Test में England captain Douglas Jardine employed his fast bowler Harold Larwood to bowl into the Australian batter's body with a packed leg side field. Bradman was dismissed on 8 and then 66 in the second innings. इंग्लैंड मैच जीत गए और सीरीज भी 4-1 ले गए, लेकिन इस सीरीज के बाद MCC passed the law that any direct attack bowling was unfair and became the responsibility of the umpires to identify and stop for the 1935 season. The Ashes is known for the intense rivalry between England and Australia और 8 दिसंबर को शुरू होगी another series जिसमें दोनों टीम्स के सुपरस्टार्स भिड़ेंगे डाउन अंडर। क्या होगा इस सीरीज में, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्पोर्ट्सकीड़ा।